नमस्कार कोचिंग प्लस देखुवा समस्त छात्र छात्री मानू आज एजुकेशन सेगमेंट स्वागत करा आज एजुकेशन सेगमेंट रे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स जो विषय आलोचना करबा से विषय है द कांसेप्ट ऑफ डिमांड बा चाहिदा कोन एथिरे आमे दुईटी विषय आलोचना करबा द कांसेप्ट ऑफ डिमांड रे जो दुईटी नियम रही से दुईटी नियम हला चाहिदार नियम बा द लॉ ऑफ डिमांड एवं द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मु आपन मानकु क्वेश्चन वाइज डिटेल कांसेप्ट ऊपर विस्तृत भाव में आलोचना कर द्रव्यर चाहिदा पहले बा चाहिदा कहले अर्थशास्त्र अनुसार द्रव्यर चाहिदा को बुझाए बा गोटे प्रकार ताको हम जदि टेक्निकल भाषा रे कहबा ताले फलप्रद चाहिदा बा इफेक्टिव डिमांड तो इफेक्टिव डिमांड होची सिर्फ तीन जिनिस दरकार गोटे होची डिजायर टू द कमोडिटी विलिंगनेस टू पे फॉर इट एवं एबिलिटी टू पे फॉर इट अर्थात कौन द्रव्यर फलप्रद चाहिदा जेतबे हमें आलोचना करूचे सेतबे तीनोटी उपादान ऊपर हमर गुरुत्व होगा दरकार गोटी होची जे द्रव्य को पाइबार इच्छा द्रव्य पाई पावना देबार सामर्थ्य एवं ता पाई पावना देबार इच्छा को बुझुछि तबे एई जो हमर जो कांसेप्ट अछि डिमांड कांसेप्ट अछि तार एई पार्ट जो क्वेश्चन आसीबो से क्वेश्चन टी होची व्हाट इज डिमांड एंड हाउ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी is affected by different factors or elaborate the factors which affects the demand of a commodity द्रव्यर चाहिदा कहले कोन जो फलप्रद चाहिदा कहले कोन जो बा चाहिदा कहले कोन जो एवं द्रव्यर चाहिदा को प्रभावित करतबा उपादान गुडी को उल्लेख कर ये गोटे क्वेश्चन आसी ता छरा आ गोटे कांसेप्ट होची the law of demand बा चाहिदा नियम नो प्रश्न उत्तर दवा पे हम कोन करियो ना प्रथमे चाहिदा नियम रो जो डेफिनेशन अछि the law of demand जोटा अछि जे all other things remain constant the demand of a commodity goes up when the price is low and it goes down when the price is high अर्थात द्रव्यर चाहिदा और अर्थात अन्य सब अपरिवर्तित रहिबो जेते बेले कि कोनोसी द्रव्यर चाहिदा द्रव्यर दर वृद्धि हेले ह्रास पाइबो एवं द्रव्यर दर ह्रास हेले वृद्धि या व्यक्त तार हम एजम्पशन बा शर्त को लिखिया पड़िबो ताको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करिया पड़िबो एवं तार जो रहिछि लिमिटेशंस बा सीमाबद्धता गुडी को लिखिया पड़िबो डिमांड कांसेप्ट रो सब लास्ट विषय हेला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बा चाहिदा स्थितिस्थापक एक्चुअली ये होची लॉ ऑफ डिमांड रो एक्सटेंशन बा ताको आउडिट के आगो को एकरे आलोचना करा जायछि जेहेतु जो लॉ ऑफ डिमांड अछि से केवल दर वृद्धि किबा ह्रास हेले बा प्राइस चेंज हुआ परे डिमांड रे कोबळे चेंज हुए सेटा से दर्शाउछि किंतु लॉ ऑफ डिमांड एटा एक्सप्लेन करूनी बा एई जिंसटा कहूनी जे प्राइस रे चेंज होआ पर दर परिवर्तन होबा फଳରେ चाहिदा रे केते परिमाण रे परिवर्तन हो अतएव ये जो इलास्टिसिटी कांसेप्ट एक्सप्लेन करूची इट एक्सप्लेन्स दैट with the change in price how much demand changes. That means it explain about the degree of change in demand due to change in price. तो यार अभी दीटा क्वेश्चन परीक्षा आसवार संभावना अछि गोटे होची डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट कैटेगरी अर्थात चाहिदा रे दर स्थितिस्थापकता उल्लेख कर एवं यार प्रकार भेद निरूपण जो कि प्राइस इलास्टिसिटी कोन हम ताको डिफाइन करे करू
एवं तापरे तार जो पांचटी जो स्थिति रही जो पांचटा स्टेट ऑफ पोजीशन रही प्राइस इलास्टिसिटी जेमती परफेक्टली इलास्टिक रिलेटिवली मोर इलास्टिक रिलेटिवली लेस इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक बा कहे बोले चाहिदार संपूर्ण स्थितिस्थापकता चाहिदार संपूर्ण अस्थितिस्थापकता एवं चाहिदार अधिक स्थितिस्थापकता एवं कम स्थितिस्थापकता सहित समान स्थितिस्थापकता को हम एक्सप्लेन करते हैं आउ गोटे बड़ प्रश्न बा इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा आसपारे सी होची जे डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी अर्थात कौनसी द्रव्यर चाहिदार स्थितिस्थापकता को निर्धारित करथुवा विभिन्न कारक गुडी को उल्लेख जदि ई भली गोटे प्रश्न आसे ताले हमको प्राइस इलास्टिसिटी कोन डिफाइन करे पड़िबा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोन डिफाइन करे पड़िबा ता छडा हमको जो 6-7टी फैक्टर्स अछि जेमि कि नेचर ऑफ कमोडिटी बा द्रव्यर प्रकृति अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बा प्रतिस्थापन द्रव्यर उपलब्धता एवं जेमति रही आपनकर मल्टीपल यूज ऑफ कमोडिटीज एमती 6-7टी हमको जो फैक्टर्स रहउची जोटा कि गोटे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गोटे द्रव्यर चाहिदार प्रतिस्थापकता को जोटा एक्सप्लेन करूची ताको हमको लिखियो पड़े या छड़ा এই কনসেপ্ট রে 3 মার্কিয়া কোশ্চেন भी আসতে 2 মার্কিয়া কোশ্চেন भी আসতে 1 মার্কিয়া কোশ্চেন भी আসতে ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन जोटा ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମ କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି जोटा लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड डिस्टिंक्शन ए जे लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात चाहिदार नियम एवं चाहिदार स्थितिस्थापकतार नियम होइतरे गोटे 3 मार्किया क्वेश्चन भी आसते इवन एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी जदि सेटा आसे ताले लॉ ऑफ डिमांड को हम एक्सप्लेन करे पड़े एवं जो 3 मार्किया क्वेश्चन जे आसीबो ताने हमको चाहिदार स्थितिस्थापकता को एक्सप्लेन करे पड़े लॉ ऑफ डिमांड रो आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबार संभावना होची सेटा होची जो व्हाई द डिमांड को शिफ्ट डाउनवर्ड्स टू राइट अर्थात चाहिदा रेखा काहे की बामरो डालो को निम्नगामी हो जदि ई बडी गोटे क्वेश्चन आसिला ताहले हमको लॉ ऑफ डिमांड रो डेफिनेशन लिखियो पड़ो ताको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करे पड़ो जेमि लॉ ऑफ डिमांड रे हम करियो पड़ो assumption लिखिले चलिबो न लिखिले चलिबो ता सहित हमको 3-4टी जो कारण रही जो कि लॉ ऑफ डिमांड का ऑपरेशनल हो बा कार्यकारी हो जेमि कि तार रही द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ यूटिलिटीज उपयोगिता नियम रो कार्यकारिता इनकम इफेक्ट आय प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव ए सब विषय आपको लिखियो तबे ये थिला आजिरो सेगमेंट रे हम आलोचना करथिले जे चाहिदार जो अवधारणा विषय बा कांसेप्ट ऑफ डिमांड विषय आलोचना करथिले आजिरो कार्यक्रम शेष करिया पूर्व मु आपन गोटे अनुरोध करिवि जे जो माने वीडियो संपर्क रे विभिन्न प्रकार कमेंट करछथि से माने को मोर विनम्र अनुरोध जो छात्र छात्री माने जे से माने कमेंट्स रे ताकर ना लिखिबा सहित से माने ओडिसा रो को जिल्ला रो आछथि से संपर्क में सूचना देबा अनुरोध